Assalamu alaikum, guys. I'll start in 2 minutes. I just want more people to join in. Okay, guys, let's start. अच्छा देखो, अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, उन ओवरहेड्स को हम हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किस तरह करते हैं। अब आज हमें दो चीजें सीखनी है। यार, ये हमारे जितने भी ओवरहेड्स आ जाते हैं, नाउ हाउ डू वी चार्ज these overheads on our products, कि हमारी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे ये ओवरहेड्स को हम चार्ज किस तरह करते हैं, उनको इन प्रोडक्ट्स पे लगाते किस तरह हैं। सही है। सो ओवरहेड्स को प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का मतलब चार्ज करना ही होता है। नाउ यूजिंग एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, we absorb or charge overheads on our products. And I hope you guys know what a rate means.
रेट का मतलब होता है मेजरिंग वन क्वांटिटी अगेंस्ट एन अदर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोल होता है, सो पेट्रोल इज फॉर एग्जाम्पल 106 रुपीज पर फॉर 1 लीटर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ रेट इज। ठीक है, एक क्वांटिटी अगेंस्ट अनदर क्वांटिटी। सो हम लोग ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का जो रेट निकालते हैं, वी यूजुअली फाइंड दैट रेट पर आवर। सही है, यूजुअली कि हम ओवरहेड को जो प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं उसका जो रेट होता है कि किस रेट पे चार्ज करना है, वो रेट पर आवर निकलता है। सही है। नाउ फॉर एग्जांपल मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आता है $6 पर आवर। सो इस बात का मतलब ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है प्रोडक्ट ए, एक है प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये दो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरी फैक्ट्री में, और लेट्स से प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनने में लगाता है 3 आवर्स। सही है, और प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनने में लगाता है 5 आवर्स। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि यार प्रोडक्ट ए पे कितना ओवरहेड चार्ज होना चाहिए, सो दैट शुड बी ओवरहेड एब्जॉर्ब करने का, चार्ज करने का रेट था $6 पर आवर। सो सिंस प्रोडक्ट ए टेक्स अप 3 आवर्स, सो इस पे जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होने चाहिए, जो ओवरहेड्स के एक यूनिट पे लगने चाहिए प्रोडक्ट ए के, दैट शुड बी $18। और प्रोडक्ट बी पे, दिस इज फॉर प्रोडक्ट ए, एंड जो प्रोडक्ट बी पे एब्जॉर्ब होने चाहिए ओवरहेड्स, दैट शुड बी $30। सही है, बिकॉज उसमें एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं। Now the interesting thing is कि यार why do we usually keep our absorption rate per hour? हम लोग अपना absorption rate आमतौर पे पर आवर क्यों रखते हैं? उसका फायदा ये होता है कि यार अगर किसी फैक्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो क्योंकि हर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम लगता है, कोई प्रोडक्ट बनने में कम टाइम लगता है। ठीक है, सो time या hour is a very good way to be able to charge overheads onto different products। ठीक है, एक तो ये इसमें काम आता है, एंड कुछ फैक्ट्रीज इस तरह होती हैं जो जॉब कॉस्टिंग पे काम करती हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग बेसिकली ये सीन होती है कि यार आप मेक टू ऑर्डर पे काम करते हो। ठीक है, आपके अपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं है, आप ऑर्डर टू ऑर्डर आपका काम वेरी करता है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग ये होती है कि भाई हर दफा आप जो काम करते हो वो बिल्कुल मेक टू ऑर्डर होता है। सही है, एंड दैट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास जॉब कॉस्टिंग में एक ऑर्डर आए जो ठीक है 200 घंटे, 200 आवर्स लगे उस ऑर्डर को फुलफिल करने में। ठीक है, या फिर फैक्ट्री में मेरे पास एक और ऑर्डर आता है इन जॉब कॉस्टिंग जिसको बनाने में लेट्स से मुझे 50 आवर्स लग रहे हैं। सो जॉब कॉस्टिंग में आपके पास, आप इस तरह काम करते हो कि हर कस्टमर के लिए ना आप उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चीज बनाते हो, जिस तरह की चीज उसको चाहिए होती है। तो क्योंकि हर दफा जॉब कॉस्टिंग में ऑर्डर ही अलग होता है, ठीक है, इट्स लाइक टेलर मेड थिंग, तो उसमें भी ओवरहेड्स को डिवाइड करने के लिए एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर बहुत अच्छा है, बिकॉज जो भी ऑर्डर होगा, कुछ ऑर्डर में ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ ऑर्डर में कम टाइम लगेगा। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इसलिए सूटेबल रहता है सो दैट यू कैन easily charge overheads into different products if you make different products, or if you work with job costing in which you do a tailor made work। सही है, जिसमें आप specific customer requirement के हिसाब से चीजें बनाते हो। ठीक है, now I'll be giving you more examples। पहले तो ना ये वाली चीज पे एब्जॉर्प्शन रेट निकालने पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास एक डिपार्टमेंट आ गया फिनिशिंग,
एक आ गया लेट्स से असेंबली, और इनके शीट बनने के बाद इनके टोटल ओवरहेड्स हमें गिवन है, दिस इज 600,000 and this is 800,000. Now you will see in questions there are two types of hours given. क्वेश्चन में आपको लेबर आवर्स भी गिवन होंगे जो एक डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, विच टेल्स यू कि लेबर उसमें उस डिपार्टमेंट में लेबर ने पूरे साल में या पूरे महीने में कितना काम किया है, और दूसरे आपको आवर्स गिवन होंगे मशीन आवर्स, ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट में मशीन ने कितना काम किया। खैर अगर एक डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है, सही है, तो लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि इस डिपार्टमेंट में लेबर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू मशीन। और अगर एक डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव भी कहते हैं उसको, और उसको कैपिटल इंटेंसिव भी कहते हैं, मशीन इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इज द सेम थिंग। मशीन इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जिसमें मशीन का काम ज्यादा होता है। नाउ फॉर बोथ ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स इन द क्वेश्चन यू वुड बी गिवन labor hours and machine hours. सही है, लेट्स से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स हैं 100,000 आवर्स, और इसके मशीनिंग डिपार्टमेंट्स हैं 7,000 आवर्स, एंड असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स हैं 24,000 आवर्स, और machine hours हैं 40,000 hours. Now, if I look at these two departments, I can say कि जो मेरा finishing department है, this is a labor intensive department. Why is it a labor intensive department? क्योंकि finishing department में labor ने ज़्यादा काम किया है, machine ने कम काम किया है, सही है? And assembly department जो है, assembly department capital intensive है, क्योंकि इसमें machine का काम ज़्यादा है as compared to labor. So अगर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा होता है find a suitable overhead absorption rate for each department, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है, so आपको डिसाइड करना होता है कि यार हम जो लेट्स से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं, लेट्स से फिनिशिंग का निकाल रहे हैं, तो इस ओवरहेड की कॉस्ट को विच इज 6 लाख, ये जो कॉस्ट है ओवरहेड की, इसको शुड बी डिवाइड विथ लेबर आवर्स और विथ मशीन आवर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना तो पर आवर है, तब इसको लेबर आवर के थ्रू निकालें या मशीन आवर के थ्रू निकालें, उसका डिसीजन इस तरह लिया जाता है, जो लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसमें लेबर आवर ज्यादा होते हैं, उसको लेबर आवर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे इसको अब मैं डिवाइड करूंगा 1 लाख लेबर आवर से, ठीक है, बिकॉज इस डिपार्टमेंट की लेबर आवर ज्यादा थे, सो इट्स अ लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट। ये आ जाता $6 पर लेबर आवर। सिमिलरली अगर मैं असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालता, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन 8 लाख जो उसके ओवरहेड्स हैं, डिवाइडेड बाय, I would have divided this department by machine hours, because इस डिपार्टमेंट में, असेंबली डिपार्टमेंट में, इफ यू सी machine hours ज़्यादा है, so it's a capital intensive department. So this is how you take a decision कि लेबर आवर मशीन आवर में से जिस डिपार्टमेंट के जो आवर ज़्यादा हों
सही है, तो आप उससे डिवाइड करते हो. So this would have been $20 per machine hour. Guys, is this thing clear? Okay, if you have a problem in assembly, देखो, what you need to understand is, जब हम overhead absorption rate निकाल रहे हैं, so overhead absorption rate निकालने के लिए हमें अपने overheads को hours से divide करना है, ठीक है? So how do you take decision कि यार मैं अपने assembly के जो overheads हैं उसको labor hour से divide करूं या machine hour से divide करूं? How do you take that decision? So उसका decision बड़ा straightforward और simple होता है. लेबर आवर और मशीन आवर में से दोनों में से जो भी ज्यादा आवर्स हो, ठीक है, आप उससे डिवाइड करते हो. तो असेंबली में लेबर आवर थे 24,000, मशीन आवर थे 40,000. सो सिंस 40,000 इज द हायर नंबर ऑफ आवर्स, so इसलिए मैंने इसको 40,000 से डिवाइड किया. और फिनिशिंग में इफ यू कैन सी, लेबर आवर ज्यादा थे, मशीन आवर कम थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेबर आवर से डिवाइड किया था. ओके, और इसका आंसर जो है एब्जॉर्प्शन रेट, वो डेसिमल्स में भी आ सकता है. अच्छा, now I'm writing down an example. You guys find out the overhead absorption rate, and please mention if it should be per labor hour or per machine hour so that I'm clear that you got the example. So let's say we again have two departments. One is assembly, one is finishing. ठीक है, और इनके हमारे पास टोटल ओवरहेड्स हैं. असेंबली के हैं 5 लाख, फिनिशिंग के हैं 8 लाख, ठीक है. वी हैव मशीन आवर्स and we have labor hours. Yes, please find out the overhead absorption rate for assembly and for finishing and tell me if it's per labor hour or per machine hour. ठीक है, that's correct, Amar. So हमारा जो overhead absorption rate आ रहा है for assembly, that should be 5 lakh divided by 40,000 machine hours, which is $12.5 per machine hour. और हमारा finishing में जो आएगा overhead absorption rate, finishing का जो overhead absorption rate होगा वो होगा 8 लाख, and I will divide this by 100,000 labor hours. So this will be $8 per labor hour. Yes, are you guys clear now?
Confusions, if any? अच्छा यार, चलो अब इसका पास पेपर में जिस तरह पार्ट आता है, लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वी डिड दिस वेरी रिसेंटली, लेकिन आज हमें सिर्फ एक काम करना है। वी नीड टू कैलकुलेट to two decimal places the forecast overhead absorption rate for the machining and finishing departments for the 3 months. ठीक है, this is October November 13 variant 23। सही है। अच्छा, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में दोनों का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। So पहले मैंने लिखा मशीनिंग, एंड इफ यू सी ये 6 मार्क का है। ठीक है, सो मशीनिंग एंड दूसरा डिपार्टमेंट है फिनिशिंग। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मशीनिंग के टोटल ओवरहेड्स हमें गिवन है 37425 और फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड्स हैं 20875। सही है। फिलहाल हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसको मशीन आवर से डिवाइड करें या लेबर आवर से डिवाइड करें, रेट किस तरह निकालें। So let's see. Okay. If you look here, ये मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं, ये इसके लेबर आवर्स हैं। सही है, तो आई थिंक इसमें मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स आर हायर एज कंपेयर टू लेबर आवर्स। सही है, इसकी मशीन आवर्स ज़्यादा है, तो इस डिपार्टमेंट में हम मशीन आवर्स यूज़ करेंगे विच इज़ 4250। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इफ़ यू लुक, इसके लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, तो इसको फिर हम लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। So 4250 and 4950. This will be 4250 machine hours, and this was 4950 labor hours. So इससे हमारे एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएंगे this is 8.81 per machine hour, and this is
4.22 per labor hour. Okay, now let's move on to another past paper question in which we will be finding the overhead absorption rate. Achha, now what I want you guys to do is the questions that we have done already. ठीक है, जैसे हमने क्लास में have we done this question? हमने क्वेश्चन किया है? Guys, we haven't. Okay. अच्छा, फिर एक काम करो, तुम लोग के पास बुक्स हैं अब, सही है, बुक्स कॉलेज में भी आ गई हैं, by the way you can get it from there. You guys also have the soft copy for this. If you don't, this is May June 12 variant 22. You can either get it online if you like, you can go to the college and get your books, and this is question 3. You guys do this, ठीक है, शीट बनाओ उसकी, ओवरहेड एनालिसिस शीट, ठीक है. Okay guys, again, have you guys done this question? Chester Limited, I don't think we have done this either. Okay, that's also a good thing. This is May June 14 variant 23 and question 3. You guys also need to do this, ठीक है, इसकी तुम्हें ओवरहेड शीट बनानी है और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, which I think is part B and part C, ठीक है. Okay, या part C and D, C and D करना है तुम लोगों को. ये हमने किया है, I remember हमने ये सॉल्व किया हुआ है. Have we? Okay, great. So
If we have done this, could anyone please tell me कि इसके ये टोटल क्या आए थे? मशीनिंग के टोटल ओवरहेड्स क्या थे और फिनिशिंग के क्या थे? Could anyone please tell me? Yes, guys. मशीनिंग के टोटल ओवरहेड्स और फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड्स. Machinery was 788,15, and finishing was 555,85. We have done this in previous classes. ठीक है, I'm just getting the answer from you guys. इसका year है May June 1522. अच्छा, now that we have the total overheads for machining and finishing, next part is we need to calculate an appropriate overhead absorption rate for each production department to 2 decimal places. So अगर पहले मैं machining का निकालता हूँ overhead absorption rate, ठीक है, तो machining के overheads थे 788,15. अब इस overhead को let's see हमें किससे divide करना चाहिए. इसके machine hours हैं 58,000 और इसके labor hours हैं 26,000. What do you think? किससे divide होना चाहिए? Should I divide this with machine hours or labor hours? I should be dividing this with my machine hours. Okay. इस डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा हैं. क्या आ रहा है इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? दिस इज 1.35 पर मशीन आवर. ठीक है, लेट्स डू फॉर फिनिशिंग. फिनिशिंग के ओवरहेड्स हमारे थे they were 555,85. Now this 555,85 इन ओवरहेड्स को हमें किससे डिवाइड करना चाहिए? Should I divide this with labor hours or machine hours? इसको हमें डिवाइड करना चाहिए with labor hours because finishing डिपार्टमेंट के labor hours ज्यादा हैं. So this is 1.32 per labor hour. Okay. Now let's move on to another question. Have we done this question? I'm assuming we have. Yes. Okay, great. Please यार मुझे इसके cutting और stitching के total overheads का final answer बता दो. से cutting आ रहा है 210,200 और stitching 204,600. ठीक है, ये आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. ओके. अच्छा, इसमें एग्जामिनर ने आपको खुद बताया हुआ है कि आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है कटिंग डिपार्टमेंट का
बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अच्छा यार, अब आमतौर पे हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं पर आवर, ईदर पर लेबर आवर और पर मशीन आवर, लेकिन this is not the only way to find out the overhead absorption rate. Some companies have their own ways जो उनको लगता है वो ज़्यादा suitable हैं, सही है। जैसे इस पे लेबर आवर्स की जगह वेजेस से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट निकल रहा है, ठीक है। wages is basically the money that you pay to the labor, so it's more or less the same thing as labor hours. लेकिन what you need to know is, see, चलो पहले हम करते हैं, पहले मशीन आवर्स वाला ये कर लेते हैं, स्टिचिंग का पहले निकालते हैं, because since this is different than the other questions that we did, so I want to tell you something about this before we do this. So stitching department में we need to find out, say I'm writing stitching, ठीक है, I'm writing my overhead absorption rate. So yeah, I'm doing stitching department first, and this is pretty straightforward because I know I have to divide that by machine hours. So yeah, so stitching department ओवरहेड्स हैं 2,04,600 और इसके मशीन आवर्स ढूंढते हैं जरा। ओके, 2,04,600। Now, this question is really interesting because if you see in the whole question, if you go through everything, इस पूरे एरिया में कहीं भी मशीन आवर्स गिवन नहीं है कि इस पूरी फैक्ट्री में कितने मशीन आवर्स लगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक डेटा गिवन है कि यार इस फैक्ट्री में इन 3 प्रोडक्ट्स के कितने कितने यूनिट्स बनते हैं, how many units are made, and how many machine hours are required per unit. So yes, so using this data, I can find out the total machine hours that would be used in the factory. For example, अगर मैं small के निकालता हूँ कि small पे total machine hours कितने लगे होंगे पूरे साल में, तो वो होंगे 30,000, सही है। Medium के होंगे machine hours होंगे 36,000 और large के machine hours होंगे 22,000। सही, मैं इन यूनिट्स को इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। So once I add these 3 machine hours, मुझे पता चल जाएगा फैक्ट्री में टोटल मशीन आवर्स कितने यूज हुए। So 88,000 machine hours यूज हुए हैं टोटल, and this was the only way I could find out the total machine hours. Okay, machine hours निकालने में कोई confusion है? मैंने कैसे कैलकुलेट की 88,000? Yes, confusion? Okay, so I'll divide this by 88,000. कितना आ रहा है इसका absorption rate? This is 2.33 per machine hour. Now, for the cutting department, दो चीजें काम की हैं। पहली बात, कटिंग डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स जो थे वो थे 210,200, so 210,200. Now please remember, whenever we're finding out an absorption rate, if it's per hour, तो very good, सही है, जो majority questions में होता है।
लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इफ यू सी वी नीड टू डिवाइड दिस बाय डायरेक्ट वेज एंड डायरेक्ट वेज would be the amount in dollars that we pay to the labor. सही है, that we pay to the labor of the cutting department. सही है. So जब आप एक ऐसा absorption rate निकालते हो जिसमें ऊपर भी डॉलर होता है और नीचे भी जो फिगर होता है that is also in dollars because wages is not in hours, it's in dollars. So your absorption rate comes out in terms of a percentage. So yeah, this only happens when you have a dollar amount in the denominator too while finding out the overhead absorption rate. So yeah, so this is how it works. If it's per hour, that's great. But if you're finding out it through a way in which there is dollars in the denominator as well, so you need to find it out as a percentage. ठीक है, the absorption rate. So we need to, देखो I'm just saying कि इसमें जो मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहा हूँ उसको मुझे डिवाइड करना है डायरेक्ट वेज से. अब डायरेक्ट वेज इज एन अमाउंट इन डॉलर्स दैट वी पे टू द लेबर. ठीक है, और मुझे डायरेक्ट वेज कौन से डिपार्टमेंट की चाहिए? कटिंग डिपार्टमेंट की. तो जो भी ऐसा एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं ना हम, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जिसमें नीचे डॉलर वाली अमाउंट आती है, आवर्स की जगह नीचे डॉलर की अमाउंट आ जाती है, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं बिकॉज दैट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कम्स in the form of a percentage. Okay, so 2,10,200. अब मुझे डायरेक्ट वेजेस चाहिए ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट बिकॉज मैं कटिंग डिपार्टमेंट की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहा हूँ. अब ये मुझे बताया हुआ है कि भाई लेबर को कितने पैसे दिए जाते हैं. ठीक है, बिकॉज मुझे डायरेक्ट वेज चाहिए, तो मैं ये देखूंगा लेबर को कितने पैसे दिए जाते हैं इन दिस कटिंग डिपार्टमेंट ताकि मुझे कटिंग डिपार्टमेंट की वेजेस पता चल जाए. तो स्मॉल ब्रीफ केस बनाने में वी पे देम $17 पर यूनिट, मीडियम बनाने के लिए वी पे देम 18 एंड लार्ज बनाने के लिए वी पे देम 20. So if I want to find out the total wage for the cutting department, so for small, and I'm only looking at the labor cost of the cutting department, not the stitching department, because I'm finding out the absorption rate for the cutting department. तो wages भी cutting department की ही matter करती हैं. अब अगर मैं स्मॉल पे देखता हूँ कि मैं लेबर को कितना पे कर रहा हूँ, 10,000 यूनिट्स बनते हैं और पर यूनिट आई एम पेइंग देम $17. सो स्मॉल की जो लेबर होगी उसको हम पे करेंगे 170,000 टोटल वेजेस. मीडियम की जो होगी उसको हम पे करेंगे 18 बाय 9,000. दिस इज 162,000 एंड लार्ज को वी वुड पे 4,400 into 20, which is 88,000. सही है, इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर की टोटल वेज आ जाएगी. कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर की टोटल वेज आ जाएगी which is 170 plus 162 plus 88 and that sums up to 420,000. सही है. Now if you see यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डॉलर आ रहा है ना, वेज इज इन डॉलर, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो आएगा, this will be 50.04% of direct wage. This is the absorption rate. Now tomorrow we will be doing more questions in which we will first of all find out the overhead absorption rate जो हमने इसमें निकाला है. लेकिन I think you all have a fair idea now कि overhead absorption rate निकालते कैसे हैं. कल की क्लास में मैं मेनली तुम लोग को ये सिखाऊंगा कि यार now that you have found out the overhead absorption rate, तुमने ये फिगर आउट कर लिया है कि किस रेट पे किस तरह ओवरहेड को चार्ज करना है. सही है, तो कल अब मैं तुम लोग को ये सिखाऊंगा कि यूजिंग दिस overhead absorption rate, how will you
चार्ज दिस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को किस तरह यूज करके तुम प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने ओवरहेड्स को चार्ज करोगे, कि अभी इसको प्रोडक्ट्स पे लगाया कैसे जाता है, इस एब्जॉर्प्शन रेट को यूज किस तरह किया जाता है to charge overheads onto your products that you make. Okay guys, are we good for now? I hope तुम लोग को आज की क्लास में ये समझ आ गया कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते वक्त हम मशीन आवर से डिवाइड कब करते हैं और लेबर आवर से डिवाइड कब करते हैं। ठीक है, कल हम ये देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन रेट जो हमने निकाला है उस एब्जॉर्प्शन रेट को प्रोडक्ट पे किस तरह अप्लाई करते हैं या चार्ज करते हैं। Okay, this is it for today. I'll see you guys tomorrow, and don't forget I gave you guys 2 questions today to do. Okay, you need to do both of them. Okay then, bye.